हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये एडिटोरिया की जो मैगज़ीन है, आज ये उसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 47 पढ़ेंगे। तो इसका नाम है मेजर डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स, जो कि ऑफ द ईयर 2021 एंड 2022 में जो हुए हैं वो सारे देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। July 2022, the Drug Controller General of India has approved India's first vaccine, Cervavac, bill to fight cervical cancer. This vaccine has been manufactured by the Serum Institute of India. Recently, the Sea Guardians 2 naval exercise between China and Pakistan was held on the Shanghai coast. ठीक है, शंघाई कोस्ट। 19-year-old जानवी दंगोती, a resident of Andhra Pradesh, India, has become the youngest analog astronaut of the Analog Astronaut Training Center (AATC). India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant will be inducted into the Navy of the occasion of Amrit Mahotsav of Independence on August 15, 2022. The fourth test was recently completed. It has been constructed by the Cochin Shipyard Limited. ठीक है। The Union Minister of Science and Technology Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first autonomous navigation facility. तो तिहान एंड क्या नाम है इसका, TIHAN at IIT हैदराबाद। The Indian Navy inducted the first advanced light helicopter, Indian Naval Air Squadron 324, तो INS 324 into INS देगा एट विशाखापट्टनम। ठीक है। Recently, ISRO successfully launched a PSLV C-53 mission from Sriharikota, Andhra Pradesh. ठीक है। Researchers from the Indian Institute of Science have developed an analog chipset named Aryabhata 1. The chipset will be helpful in speeding up artificial intelligence-based applications. Recently, DRDO conducted the first flight test of autonomous flying technology demonstrator in चित्रदुर्ग, कर्नाटका। ठीक है। हम यहाँ पे जून मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो भी देख लेते हैं, जून 2022 की। रिसेंटली ईरान लॉन्च्ड इंडिजिनसली मेड सॉलिड फ्यूल रॉकेट, क्या नाम है इसका, जुलजाना, ओके, into space. New Space India Limited (NSIL) launched the communication satellite GSAT-24 built by ISRO. Recently, South Korea successfully launched indigenously built space rocket Nuri. Recently, the Capstone spacecraft was launched by NASA to orbit the moon. The supercomputer frontier developed by US scientists has become the world's fastest supercomputer. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Asia's largest and India's first liquid mirror telescope was installed on a hill in Uttarakhand. ठीक है। NATO member countries and the armies of Finland are Sweden conducted a naval exercise Baltops 2022 in the Baltic Sea। ठीक है, तो बाल्टिक सी में हुई है, आप देख लीजिएगा। द US स्पेस एजेंसी नासा विल लॉन्च द दाविंची मिशन। ओके, द US स्पेस एजेंसी नासा विल लॉन्च द दाविंची मिशन in the year 2019 to study the planet Venus. आगे पढ़ते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स डेवलप्ड फॉर एनिमल्स. इट वॉज डेवलप्ड बाय द हरियाणा बेस्ड ICAR NRC. Indian Navy decommissioned INS Akshay and INS Nishank at Mumbai Naval Dockyard after 32 years of service. X-Khan Quest 2022 multinational military exercise was organized in Mongolia, in which Indian Army contingent also participated. ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। चाइना प्लान्स टू सेट अप सोलर पावर प्लांट्स इन स्पेस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दिस चाइना विल सेंड अ सैटेलाइट टू स्पेस इन 2028। ठीक है, 2028 में भेजेगा। द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून हैज़ बीन रिलीज बाय चाइनीज साइंटिस्ट। आगे बढ़ते मई 2022 के जो थे वो पढ़ लेते हैं। From May 1 to May 27, the Defender Europe 2022 and Swift Response 2022 war exercises were organized by the NATO countries. Defense Minister Rajnath Singh launched two warship INS Surat and INS Udyagiri. Okay. Defense Minister Rajnath Singh launched two warship INS Surat and INS Udyagiri at the Manjagaon dock shipyard in Mumbai. इसके बाद पढ़ते हैं स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड कलाम 100 रॉकेट। कलाम 100 रॉकेट द थर्ड स्टेज ऑफ विक्रम 1 रॉकेट। उसके बाद है बोंगो सागर। आगे पढ़ते हैं। बोंगो सागर मैन्यूअर्स India and Bangladesh. Okay. India and Bangladesh Navy first phase of Port Mongla बांग्लादेश में है on 24 to 25 May and second phase in Bay of Bengal on 26 and 27 May। उसके बाद है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो मतलब GRSE in association with L&T shipbuilding लॉन्च द इंडियन नेवल सर्वे शिप INS डायरेक्टर इन चेन्नई। उसके बाद पढ़ते हैं इंडियन नेवी डिकमीशन गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल शिप INS गोमती इन मुंबई आफ्टर 34 years ऑफ सर्विस। द स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर परम पोरुल वॉज इनाग्रेटेड बाई NIT तिरुचिरापल्ली अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इट विल बी यूज्ड फॉर अपकमिंग गगनयान मिशन। आगे पढ़ते हैं। द परम अनंत सुपर कंप्यूटर वॉज डिसाइडेड टू द नेशन एट IIT गांधीनगर अंडर द फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके बाद पढ़ते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा इन द US अचीव द फीट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड इन सॉइल ब्रॉड फ्रॉम द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। इन दिस द सीड ऑफ द प्लांट कॉल्ड अराबिडोप्सिस थालियाना वॉज ग्रोन। ठीक है। रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट हैव प्लान्ड क्लोजवे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट। ओके, सर्वे मतलब एक सेकंड में फिर से पढ़ती हूँ। रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट हैव प्लान्ड क्लोजवे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे CHES टू सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स लाइक अर्थ आउटसाइड द सोलर प्लैनेट। ठीक है। अब अप्रैल मंथ की जो अप्रैल 2022 में जो न्यूज़ रही है वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रिसेंटली चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द न्यू सैटेलाइट जोंगजिंग 60 वरुण 2022 इन द अरेबियन सी बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस 30 March on 3। ठीक है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गुफेन 3 वाया जो लॉन्च किया है इसने March 4C रॉकेट। अब इंडियन आर्मी एंड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम फ्रॉम पोखरन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट्स थ्रू एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और द इंडियन नेवी हैज़ इनाग्रेटेड द 6th and the last स्कोपेन क्लास सबमरीन वाकशीर built under Project 75 at Manjgaon
Dock Limited in Mumbai under Project 75. Six submarines have been built in collaboration with France. Russia has test fired the world's most powerful intercontinental nuclear capable ballistic missile RS-28 Samrat, or it is capable of attacking from one continent to another in any corner of the world. आगे पढ़ते, इंडिगो हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ द इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन. इंडिया India has become the third country in the world after USA and Japan to have its own navigation system. ठीक है. The Indian Coast Guard inducted Coast Guard ship Urja Prava into the Navy at Bharuch, Gujarat में. Recently, India successfully test fired the anti-tank guided missile Helena, one of the world's advanced such tank weapons developed by DRDO in पोखरण राजस्थान में. आगे बढ़ते हैं. Recently, Indian astronomers in collaboration with French astronomers have discovered a new galaxy named Ultraviolet Imaging Telescope, the VVIT J 2022. It is 136 light years away from the Earth. ठीक है. ये गैलेक्सी न्यू गैलेक्सी जो है डिस्कवर की गई है. सॉरी. द प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन एक्सियम मिशन 1 और एक्सियम और जो क्या कहते हैं X1 विल बी लॉन्च्ड बाय नासा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इसराइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम. आगे बढ़ते हैं. इंडियन स्टार्टअप पिक्सल इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एक्स सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला. आगे यहाँ पे मार्च मंथ की जो न्यूज़ रही वो भी पढ़ लेते हैं. Indian President Ramnath Kovind conferred the President's Color honor on INS Valsura for his exceptional services in the Indian Army. ठीक है. The Western Naval Command conducts offshore security exercise called Prasthan in Mumbai. NATO member countries hold Cold Response 2022 military exercise in Norway. आगे बढ़ते. इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ SSLV फ्रॉम सतीश धवन सेंटर एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. नासा हैज सक्सेसफुली लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट. ओके. नासा हैज सक्सेसफुली लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट GOES-T. ठीक है. GOES-T. Center for Development of Advanced Computing installed supercomputer Param Ganga at IIT Roorkee. India's first indigenous flying trainer Hansa NG developed at CSIR NAL was conducted a sea trial in Puducherry. ठीक है. आगे बढ़ते. ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड द सेकेंड इंडिजिनसली बिल्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 into the lower orbit of the Earth. आगे बढ़ते. China's unmanned submarine Haidu-1 has set a new record of reaching the Earth's deepest point, the Mariana Trench. अब फरवरी 2022 की जो न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं. द फर्स्ट सी ट्रायल ऑफ द फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन वागीर फॉर द इंडियन नेवी वॉज कंडक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 75. इंडिया विल बिल्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस. ठीक है. गोवा शिप यार्ड लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर द फिफ्थ शिप ICGS सक्षम to the Indian Coast Guard. GSL has signed a contract with the Ministry of Defense. Okay. GSL had signed a contract with the Ministry of Defense in 2016 for the 5 Coast Guard offshore patrol vehicle. आगे बढ़ते. On February 14, 2022, ISRO launched Inspire Sat
इंस्पायर सैटेलाइट है, तो इंस्पायर सैट थ्रू PSLV-C52 विच was developed in collaboration with the US, Taiwan and Singapore. It is a student satellite that will study the sun's orbital temperature and ionosphere. Pravega. Okay, Pravega, one of the most powerful supercomputers in India, was launched by the Indian Institute of Science. तो यहाँ पे परम सिद्धि AI इज़ द इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर. ठीक है. Israel has successfully test fired a new naval air defense system called CDOM. NASA announced the closure of its operation at the International Space Station by 2031. Air Forces of Bangladesh and United States of America organized the COP South 2022 air exercise in Dhaka. ISRO का स्पेस सैटेलाइट चंद्रयान 2 has detected solar protons event. For the first time, solar proton expose radiation hazard to humans in space. NASA's Parker Solar Probe mission took pictures of the surface of Venus for the first time in space. These images highlight the these images highlight the specific geographical location of the planet Venus. आगे पढ़ते हैं. Researchers have discovered the largest galaxy of all time, Alconius, which is 240 billion times larger than the sun. ठीक है. मतलब एक लार्जेस्ट गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया है. Scientists in Australia have discovered a mountain which has been named the super mountain. They formed twice in Earth's history. और the first between 2000 and 1800 million years ago, and the second between 650 and 500 million years ago, stretching up to 800 kilometers across the 3 times the length of the present day Himalaya range to 2300 kilometers. आगे पढ़ते हैं. India has banned the import of foreign drones from the objective of promoting indigenous drones. ISRO has decommissioned the INSAT 4B satellite. It is an Indian communication satellite that has launched in 2007 by an Ariane 5 rocket. Its mission life was 12 years. ठीक है. India received the 12th anti-submarine warfare aircraft P-81 from American company Boeing. India had signed a contract for 8 P-81 aircraft in 2009, while in 2016 for additional aircraft was inducted. आगे जनवरी मंथ की जो 2020 की न्यूज़ है, 2022 की न्यूज़ है, वो देख लेते हैं. Western Naval Command conducted joint maritime exercise Pashchim Lahar in the Arabian Sea. The exercise lasted for 20 days and was attended by the Indian Navy, Air Force, Army and Coast Guard. Andaman and Nicobar Naval Command inducts 2 indigenously built advanced light helicopters through Mk3. It has been constructed by HAL. It will be used for search and rescue mission. आगे बढ़ते हैं. नेवीज ऑफ रशिया, चाइना एंड ईरान ऑर्गेनाइज द चीरू 2022 naval exercise in the Gulf of Oman. The NATO partner countries conducted a maritime exercise called Neptune Strike 2022 in the Mediterranean Sea from the January 24 to February 4. In January 2022, South Africa launched its first indigenous satellite constellation MDA Sat-1, built entirely in Africa. It is a nano satellite which was launched under SpaceX Transporter 3 mission on a Falcon 9 rocket. ठीक है. The navies of India and Russia conducted the PASEX exercise in the Arabian Sea. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ISRO successfully tested the cryogenic engine Vikas for the India's first human space mission Gaganyaan at Mahendragiri in Tamil Nadu. In addition to the Quad countries India, US, Australia and Japan. ठीक है.
Canada and South Korea participated in the submarine warfare as ASW drill Sea Dragon 2022 in the Western Pacific. North Korea successfully test fired the ballistic missile Hwang Song 12. आगे पढ़ते हैं. Janvi Dangeti from Andhra Pradesh became the first Indian woman to complete NASA's International Airspace Program. Russia has conducted the first ever flight test of the world's heaviest supersonic fighter aircraft, White Swan Tu-160M bomber. आगे पढ़ते हैं. Israel conducted a successful test of the Arrow 3 anti-ballistic missile system. ठीक है. 49 Starlink satellites were launched under the Starlink project being run by Elon Musk company SpaceX और इसका aim है is to provide high-speed internet service to the world. Government of India entered into an agreement with Mauritius for export of advanced light helicopter ALH Mk3. आगे पढ़ते हैं. साइंटिस्ट इन चिले have detected a planet 11 times larger than Jupiter in the solar system, which has been named B Century. It is 325 light years away from the Earth. The Parker Solar Probe mission launched by NASA became the first spacecraft to enter the Sun's outer atmosphere. DRDO and Indian Air Force successfully fired the standoff anti-tank मतलब SANT इसे एंटी सैंड मिसाइल फ्रॉम पोखरन राजस्थान. आगे पढ़ते. DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सम्राट मतलब स्मार्ट SMART smart developed for the Indian Navy from the Balasore in Odisha. NASA scientists have discovered an extraterrestrial planet in the solar system which has been named GJ 367b. Israel has handed over advanced Heron drone to India, which will deployed in Ladakh sector to guard the Indian border. आगे पढ़ते हैं. India's private space company Skyroot Aerospace will launch its first rocket Vikram 1 with the help of ISRO by the end of 2022. The surface-to-surface missile Parle developed by DRDO was successfully test fired from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. अब दिसंबर मंथ की जो न्यूज़ है 2021 की वो देख लेते हैं. On December 18, DRDO successfully test fired the nuclear capable ballistic missile Agni P from Abdul Kalam Island, जापान. एक सेकंड, मैंने क्या गलत बताया है. APJ अब्दुल कलाम. Japan has built the world's first dual-mode vehicle. The US Space Agency NASA launched the world's largest and most powerful telescope James Webb from French Guiana via an Ariane 5 rocket. DRDO successfully conducts flight test of indigenous high-speed heat abhyas from Chandipur in Odisha. ठीक है. The Psyche mission will be launched by NASA in August 2022. The mission will study the asteroid named Psyche located between Mars and Jupiter. आगे पढ़ते हैं. India will launch its first manned mission Gaganyaan in 2023 instead of 2022. ठीक है. The US Space Agency NASA launched a new X-ray mission from the Kennedy Space Center through a Falcon 9 rocket that will detect the mysterious object of the universe. The Indian Air Force deployed the first squadron of S-400 missiles along the Indo-Pak border in Punjab. The Indian Navy has decommissioned INS Kukri after 32 years service. It was the first of the indigenously built missile corvettes. आगे पढ़ लेते हैं.
Russia successfully test Russia successfully test fired the heavy lift rocket Angara A5. Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE launched India's first large survey vessel Sandhyak for the Indian Navy. President Ramnath Kovind awarded the Presidential Standard of the Indian Navy's 22nd Missile Vessel Squadron. The squadron has carried out many missions like Operation Vijay, Operation Prakram, etc. आगे बढ़ते हैं द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज़ सेलेक्टेड 10 पीपल फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन इंक्लूडिंग वन ऑफ देम इज़ इंडियन ओरिजिन अनिल मेनन. तो इंडियन ओरिजिन से हैं अनिल मेनन. ठीक है. On December 7, DRDO successfully flight tested the vertical launch short-range missile from Chandipur test range in Odisha. ठीक है. अब दिसंबर 2021 की न्यूज़ देख लेते हैं. China launched the world's first Earth science satellite, Guangmu, into space by a Long March 6 rocket. The U.S. space agency NASA and Elon Musk company SpaceX launched the Crew 3 mission on November 10, 2021. Under this, 4 astronauts have been sent to the space station, including Indian origin NASA's veteran space walker Raja Chari as mission commander. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. वांग यपिंग हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस एज पार्ट ऑफ चाइनाज शेंजो 13 स्पेस मिशन. द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स first DART double asteroid redirection test mission. The Skyroot aerospace based in Hyderabad has successfully test fired India's first indigenously developed cryogenic rocket engine Dhawan 1. आगे बढ़ते. India and Japan will launch a joint mission LUPEX Lunar Polar Exploration mission on the moon. The mission will explore the south pole of the moon. आगे बढ़ते. इंडियन नेवी कमीशन इंडिजिनसली बिल्ट 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला एट नवल डॉकयार्ड इन मुंबई. अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं अक्टूबर मंथ की जो न्यूज़ रही है 2021 में, वो देख लेते हैं. For the first time, Russia successfully test-fired the Zircon hypersonic missile from the nuclear submarine. China successfully launched its first solar exploration satellite XIHE कह लीजिए in space through a Long March 2D rocket. The U.S. space agency NASA launched the first space mission to study Jupiter's Trojan asteroids on October 16 called Lucy mission. The Lucy mission. ठीक है. China successfully test-fired a new satellite named Shijian 21. Through this, Shijian है 21. Through this, the technology that reduce space debris will be tested. South Korea successfully test-fired the first indigenously developed rocket Nuri. France successfully launched the state-of-the-art satellite Syracuse 4A by an Ariane 5 rocket. On October 28, 2021, Indian Coast Guard ship Sarthak was dedicated to the nation at Porbandar in Gujarat. आगे यहाँ पे सितंबर मंथ की न्यूज़ है, वो देख लेते हैं हम लोग. DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश प्राइम एन अपडेटेड version of the surface to surface Akash missile from Chandipur range in Odisha. The naval exercise between India and Algeria was held off the coast of Algeria. It was attended by the Indian ship INS Tabar and Algerian ship Izadjar. आगे बढ़ते हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद IIT रुड़की एंड IIT बैंगलोर डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर simulator toolkit. It has been named QSIM.
China successfully launched a new Earth observation satellite GeoFan 502 through through a Long March 4C rocket. India's first nuclear missile tracking ship INS Through was built by Hindustan Shipyard Limited in collaboration with the DRDO and NTRO. आगे पढ़ते हैं. Scientists have discovered the Earth's northernmost island off the coast of Greenland, which will be named Kukertak. Okay, Kukertak Avanar Lake. Okay, Kukertak and Avanar Lake. Indian Air Force has been handed over the surface to air defense missile system in MRSAM. It has been jointly developed by the DRDO and Israel Aerospace Industries. आगे अगस्त मंथ की जो न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं. द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली रीयूजेबल सैटेलाइट Eutelsat Quantum. Okay, Eutelsat Quantum. It was launched by the Ariane 5 rocket. The sea trial of the India's first indigenously built aircraft carrier INS Vikrant began from the Kochi coast. आगे बढ़ते हैं. इसरो लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा फ्रॉम GSLV F10 on August 12. This launch was unsuccessful. आगे बढ़ते हैं. ऑन अगस्त 12, 2021 पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी. DRDO develops advanced shaft technology for the safety of Indian Air Force fighter aircraft. Emergency use of Zycov-D, the world's first and India's indigenously developed GNA-based vaccine, approved. The vaccine has been produced by the Indian company Zydus Cadila. L&T built offshore patrol vessel ICGS Vigrah was commissioned into Indian Coast Guard by Defence Minister Rajnath Singh. आगे बढ़ते. द इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 was held in Moscow, Russia. India signs MOU for procurement of anti-ship missile Harpoon from US. US astronomers have discovered the fastest orbiting asteroid ever in the solar system, which has been named 2021 PH27. China unveiled the world's fastest moving maglev train और इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर. आगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं. Hyderabad Jareen Robotics has developed India's first indigenous drone defense dome, named Indrajal. It will protect against air threats in the 1,000 to 2,000 square kilometer area. Russia successfully test-fired the world's most advanced anti-missile technology, the S-500 air defense system. For the first time, astronomers found evidence of water vapor in the atmosphere of Jupiter's satellite Ganymede. This evidence was obtained by the Hubble Space Telescope. आगे बढ़ते हैं. Russia's space agency Roscosmos launched its largest space laboratory called Nauka at the International Space Station after Kalpana Chawla and Sunita Williams. Indian origin Shrisha Bandla became the third Indian woman to fly into space. British billionaire Richard Branson flew into space with a 6-member crew on 11 July 2021 from Virgin Galactic rocket aircraft under the Unity 2022 mission. Shrisha Banda was one of these 6 members. ठीक है. संतोष जॉर्ज कुलांगरा from Kerala became the first Indian tourist to fly via Virgin Galactic.
आगे बढ़ते हैं। चाइना विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर दैट विल use thorium instead of uranium. This will be the first nuclear reactor that will not require water to cool down. The US Space Agency NASA has signed an agreement with SpaceX for Jupiter's Europa mission. The Maleshwaram the Maleshwaram Government Boys High School in Karnataka will become the first school in the country to launch a satellite. With the help of school students, 75 satellites will be ready for launch. आगे पढ़ते द खाद सॉरी इंडियाज़ फर्स्ट खादी नेचुरल पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एट जयपुर इन राजस्थान. कुवैत हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट कमर अल कुवैत बाई फॉल्कन 9 रॉकेट विच इज़ अ नैनो सैटेलाइट और इसका वेट है इज़ ओनली 1 किलोग्राम. China began the construction of the world's first commercial modular small reactor Linglong 1 from the Changjiang nuclear power plant in Hainan province. ठीक है, अब जून मंथ की जो न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं. DRDO successfully test fired the subsonic cruise missile Nirbhay on June 24, 2021 at Chandipur in Balasore, Odisha. DRDO successfully test fired Agni P nuclear capable ballistic missile from APJ Abdul Kalam Island located in the Bay of Bengal. DRDO successfully test fired indigenous rocket Pinaka from Chandipur in Odisha. आगे पढ़ते हैं. द इंडियन नेवी हैज़ decommissioned the indigenous hydrographic survey ship INS Sandhyak after 40 years of service to the country. India has signed an agreement with the US for the purchase of 3 multi-role helicopters MH-60 Romeo for its navy. China has successfully launched the meteorological satellite Fenghuan 4B. Okay. आगे पढ़ते हैं. The US Space Agency NASA has announced 2 robotic mission Da Vinci and Veritas to Venus. ठीक है. India's first indigenous temperature data logger AmbiTag has been developed by IIT Roper. It can record its surrounding temperature on a single charge for up to 90 days. आगे बढ़ते. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्बिटर इन विजन टू वीनस बाई 2030. अब मई मंथ की करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं. MACS 1407 is a new insect resistant soybean variety developed by scientists from Agarkar Research Institute in collaboration with ICAR. The Mayflower 400 is the world's first artificial intelligence managed vessel. It analyzes marine pollution and plastic present in water. The Mayflower 400 became the world's first unmanned ship to cross the Atlantic Ocean. आगे पढ़ते हैं. DRDO in association with Dr. Reddy's Laboratories has developed the anti-COVID-19 drug 2-deoxy-D-glucose. Okay, 2-deoxy-D-glucose 2DG which was approved by the DCGI for virus affected patient. Vikram Sarabhai Space Center मतलब VSSC of ISRO has developed 3 different types of ventilators and oxygen concentrators. It has been named Prana, Vayu and Swasth. Prana का होगा will deliver the respiratory gas to the patient. Vayu low cost ventilator. Swasth will work without electricity. ठीक है. China has successfully landed the first Mars rover Zhurong on Mars from the spacecraft Tianwen 1. Okay.
आगे बढ़ते, गूगल क्लाउड एंड स्पेस एक्स साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट. Iran has indigenously developed its new most powerful supercomputer Simorg. China has successfully launched the new ocean environment monitoring satellite Hyang 2D through Long March 48 rocket. The Indian Navy has decommissioned the first destroyer ship INS Rajput. आगे बढ़ते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल कमीशन द ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग इनटू द कोस्ट गार्ड. The US space agency NASA has announced to send its first mobile robot to the moon by 2023 under mission Artemis. Its rover is called Viper, which will explore resources on the moon. The COVID-19 antibody detection kit named DIPCO-1 was developed by DRDO's research laboratory. The ICMR has approved a rapid antigen test kit called Covicell for testing for COVID-19 at home. The biggest iceberg, named A76, having a surface area of around 4,320 square kilometers, broke apart from the continent of Africa. Continent of Antarctica. सो सॉरी. अब यहाँ पे अप्रैल मंथ की न्यूज़ हैं, वो भी पढ़ लेते हैं. ऐसा, शांति और ओग्रोशेरा. ओके, शांति ओग्रोशेरा 2021. दिस मल्टीनेशनल military exercise was organized in Bangladesh, in which India also participated. आगे बढ़ते, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनो स्निफर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर 100 crore पेट्रोल शिप PS Zoroaster to Seychelles. This is the fourth patrol ship to be delivered to the Seychelles. After Covishield and Covaxin, Russia's vaccine Sputnik V was granted emergency use of authorization in India. आगे पढ़ते हैं, इसरो हैज़ टाइड अप विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES फॉर इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान. द US स्पेस एजेंसी नासा हैज़ टाइड अप विद द एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स फॉर इट्स आर्टेमिस मिशन. अंडर द आर्टेमिस मिशन, 2 astronauts including a woman will be sent to the south pole of the moon by 2024. As per the data released by the Stockholm International Peace Research Institute, मतलब SIPRI, India continues to occupy the थर्ड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड. फर्स्ट पर है US और सेकेंड प्लेस पर है चाइना. आगे पढ़ते, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द फर्स्ट पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट. ठीक है, तेजस विल कैरी 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल एज पार्ट ऑफ इट्स वेपन पैकेज. नासा का जो रोवर है परसेवरेंस was succeeded in purifying CO2 from the Martian atmosphere and during it into oxygen. The UK's Met Office has signed an agreement with Microsoft to build the world's most powerful supercomputer. आगे बढ़ते, आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर was set up at Aryabhatta Research Institute, Uttarakhand, to analyze the scientific data from India's first solar mission Aditya L1. आगे पढ़ लेते हैं, astronomers have discovered the closest to Earth and the smallest black hole ever in the universe, which has been named Unicorn. The world's first helicopter, Ingenuity, sent to Mars by the US space agency NASA, made a successful flight. It was sent by NASA in July 2020. For the first time, X-rays मतलब emission was discovered on the Uranus. अब मार्च 2021 की न्यूज़ है, वो भी पढ़ लेते हैं. Russia successfully launched its first satellite Arctic M to monitor the Arctic climate on February 28. The Indian Navy commissioned its third Scorpion submarine, INS Karanj.
INS Karanj has been called silent killer. ठीक है. ISRO and NASA have jointly completed the development of Earth observation satellite MISAR. China and Russia signed an agreement with each other for the setting up of lunar space station. आगे पढ़ते द डिसीजन टू होल्ड जॉइंट एक्सरसाइज पैबल एंटी टेरर 2021 was announced during the 36th meeting of the RATS held at Tashkent, Uzbekistan. India, China and Pakistan will participated in this joint counter-terrorism exercise of SCO. On March 26, 2021, Pakistan successfully test-fired the surface-to-surface ballistic missile Shaheen-1A. Philippines signed MOU with India for procurement of BrahMos missile and other defense equipments. आगे यहाँ पे फरवरी मंथ की कुछ न्यूज़ हैं, वो भी पढ़ लेते हैं. The central government has signed a deal with rupees 48,000 crore for the purchase of 83 Tejas fighter aircraft from Hindustan Aeronautics Limited. During Aero India 2021, India and Israel decided to work together on an anti-tank, anti-torpedo defense system, मतलब शेड नाम है उसका. अकॉर्डिंग टू द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर आफ्टर चाइना एंड द US by 2030. The UAE spacecraft Hope Mars probe entered the Martian orbit on February 10. UAE became the fifth country in the world and the first Arab country to send a spacecraft into Mars orbit. ठीक है. Pakistan successfully test-fired a surface-to-surface missile named Babar. A naval exercise Iran-Russia Maritime Security Belt 2021 was held in Indian Ocean, in which India also participated. ISRO launched Amazonia 1 and 18 other satellites of Brazil by PSLV C-51 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh on February 28. आगे पढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिक्चर हैज़ बीन मेड ऑन अ नैनो सैटेलाइट एंड an electronic copy of Bhagavad Gita has also been sent along with it. India's famous scientist Sonam Wangchuk has invented a solar heated tent for the use of the Indian Army. Lucknow Metro became India's first metro services to sanitize metro coaches with ultraviolet rays. Reliance Industries Limited has received the world's first consignment of carbon neutral oil from Oxy Low Carbon Ventures OLCV of the US. अब जनवरी मंथ में न्यूज़ है 2021 की, वो भी देख लेते हैं. द 14th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका वॉज लॉन्च फ्रॉम Marmagova Port, Goa. Japan has announced the launch of the world's first wooden space satellite by 2023 to deal with space waste. ठीक है. पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1. Major Anup Mishra of the Indian Army has developed the world's first universal bullet-proof jacket named Shakti. आगे पढ़ते हैं. प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स has sent 143 satellites into space on 24 January 2021 with a single rocket. With this, it has also broken the record of 104 satellites sent by India in 2017. ठीक है. DRDO successfully launched indigenously developed smart anti-airfield weapon SAAW from the Odisha coast through Hawk-1 aircraft of Hindustan Aeronautics Limited. India signed an agreement with Russia for the purchase of 21 MiG-29S and 12 Sukhoi 30 MKIs. आगे पढ़ते हैं. DRDO has assigned motorbike ambulance service Rakshita to CRPF. This ambulance will help in emergency health service ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स. तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया. इवन पूरी एडिटोरियल कवर हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई. अब हम लोगों के पास यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट है, तो इसे भी टाइम मिलेगा तो इसे भी करा देंगे हम.
तो बाकी एडिटोरिया के सारे करंट अफेयर्स जो भी थे वो सारे कवर हो गए। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।